जय। शब्द ब्रह्म की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम लोग योग वशिष्ठ का निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 34वां सर्ग का आलोचना कर रहे हैं। हरि हरि। उसमें कल हम क्या देखें कि कल हमारा क्या विषय था? हाँ, बाजू वाला देखता है, हम नहीं देखते हैं। हम जो देखते हैं वो हमारा दुनिया है। जो नहीं देखते हैं वो नहीं है करके हम नहीं बोल सकते हैं। कुछ है जिसको हम नहीं देखते हैं। अपनी ही दृष्टि में आने वाले पदार्थ का सब अनुभव हम करते हैं, और जो अपने दृष्टि में नहीं है उसका अनुभव हम नहीं करते हैं। सामने स्थित सिद्ध व्यवहार को नहीं देख पाता है, क्योंकि सभी का यह स्वभाव है। जो दृष्टि हमारे सामने है वही उसको हम देखते हैं और दूसरा नहीं देखते हैं। इससे अपनी इन बातों में क्या आया, इस प्रश्न पर कहते हैं कि ज्ञप्ति पदार्थ भी आत्मरूप ही है। अतः जो कुछ दिखाई देता है वो तद्रूप ही दिखाई देता है। इससे अहंकार के सहित संपूर्ण जगत परमात्मा से अभिन्न है। हम कल जो विचार किए थे कि जो हम देखते हैं वही हमारा दुनिया है। जो नहीं देखते हैं हमको पता नहीं चलता है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो नहीं है। उदाहरण दिया था, जो एक बच्चा स्वप्न देख रहा है, उसके पास सोया हुआ दूसरा उस स्वप्न को नहीं देखता है, फिर भी वो चीज़ है। स्वप्न का शब्दों को, दृश्य को दूसरे पास में सोया हुआ बच्चा को नहीं दिखता है, लेकिन वो है। तो ऐसे ही हम जो नहीं देखते हैं वो चीज़ है, उसका हम मानना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, जो हम देखते हैं वो भी है और जो नहीं देखते हैं वो भी है। ऐसा अगर मान लिया तो इसमें क्या हो गया? तुम्हारे क्या फ़ायदा, क्या हुआ? क्यों इसको मनाते हो हमसे? क्यों? बात यह है, जो देखते हो वो तुम्हारे जानकारी, जिसको कहते हैं ज्ञप्ति, ज्ञान के अंदर है। और जो नहीं जानते हो वह भी ज्ञान के अंदर है। तो ज्ञान का ही सब चीज़ एक ही चीज़ हुआ। जो जानते हो वो भी जो परमात्मा है, जो नहीं जानते हो वो भी परमात्मा है। वो ज्ञान का विषय हुआ, ज्ञान का विषय हुआ। इसीलिए जो देखते हो वो जो चीज़ है, जो नहीं देखते हो वही चीज़ है। इसको दूसरे उदाहरण से भी देते हैं। जैसे हम हम इसको भी बहुत बार विचार किए हैं। पहाड़ के ऊपर चंद्रमा उदय हुआ। चंद्रमा को हम देखते हैं, पहाड़ के ऊपर देखते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि पहाड़ और चंद्रमा में कुछ दूरी है, जो दूरी को हम नहीं देखते हैं। नहीं देखते हुए भी हम मानते हैं है करके। तो वो हमारे ज्ञान का विषय हुआ। जो नहीं देखते हैं उसको भी ज्ञान देख लेता है। तो ज्ञान का जो विषय है वो सत्य है।
तो हम जो संसार को देखते हैं वो जैसे है, जो नहीं देखते हैं वो भी ऐसे ही है। दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ सत्य को मानना पड़ेगा। Yesterday we had discussed that whatever we see, that is our world, and what we don't see, we think it is not the real world because we don't see. But yet, by logic, by examples, we prove whatever you don't see, that also exists. You cannot say it is not there. For example, two boys are sleeping in one bed. One is dreaming. The other doesn't see, doesn't know his dream. Other's dream, the other boy doesn't know. Say, one hears the thunder sound in the dream and he sees the tigers or wild animals in the dream, which is not known to the other boy. But does it mean that it doesn't exist? It does exist, which is not known to the other boy. Other example also we give. Say on the mountain top you saw the moon is rising now. The full moon is rising up on the mountain top. What do you think? Does the moon come out of the mountain? Never so. You know, there is some distance between the mountain and the moon. Everybody knows it. Nobody can deny it. That shows you know something which you don't see. That is subject to your knowledge. You know the distance is there. That is subject to your knowledge, not to your senses. You don't see the distance, but yet you accept, you admit there is a distance. So to say, whatever you see, that is of course subject to your knowledge. And whatever you don't see, that also does exist and that is subject to your knowledge. So whatever is subject to your knowledge, that is the truth that does exist. So what is the conclusion? Whatever you see, that is not different from what you don't see. Both are same. Both are the absolute truth. You see only the names and forms, and the background of the names and forms you don't see, just as we see some picture, but we know picture is held by the screen behind it, which is not visible to us. But we have to accept, otherwise how can the picture be seen without any background? So background which is not seen, it is there, and that is the truth. And whatever you see also, that is also supported by the background, so that is also truth. But because whatever you see the visible phenomena which is subject to change. So whatever is subject to change, that we may not take as the truth, but the background is true. So from one angle, what we see, this world is
a changeable phenomena, it is not the truth. But behind it, the background which is not been seen, and yet it has to exist. It does exist. That is called truth. And if that is the holder, supporter, container, sustainer of the visible phenomena, that also visible phenomena also cannot be different from the background scene. So we have to, from one angle we have to see both are true, from other angle we have to see the visible world is not true, but existence behind it is truth. And still from other angle we can see what appears to be something different than this. It is there and it is not there. So yes, no, yes, no. Just as the Sardar was standing there and a driver was driving the car, it was driver was sitting in the car, and he asked the Sardar standing behind, see whether the indicator is burning or not. Is it there? It is working or not? See, please. So the Sardar started telling, yes, no, yes, no, yes, no, yes, no, because it was blinking. So he had to say, yes, no, yes, no, yes, no. So in this way we can see this world, yes, no. The world exists and not exists because it changes. Whatever we see, it is something else in a moment afterwards. Whatever we knew yesterday, it is something different. Today we know something else. So whatever we see by our senses means we perceive by our senses, that is subject to change. It is subject to grow, and so it will be subject to decay also. So changing phenomena. So we can say from other angle we can say, yes, it is truth. No, it is not truth. Yes, no, yes, no. So from which angle you see, that is your business, how to take this world. Altogether we can say whatever is subject for something, it is a subject, it is. So whatever exists as anything, let it be anything, subject or object or seer or seen, whatever is it, that does exist. So existence is the truth. Non-existence cannot exist, that is not the truth. That is what we see in the Gita. Na sato vidyate bhava, na bhavo vidyate sataha. The existence has got no absence, no non-existence. The presence has got no absence in it, and absence cannot have presence in it. Existence cannot have non-existence. Non-existence cannot have existence. It is just opposite to each other. Non-existing is never existing, and existing is ever existing. So this is how truth cannot be denied and untruth cannot be accepted. This is what we see by our analysis and
लज्जिक्स। संकल्प और स्वप्न के सदृश ही ज्ञप्ति जगत के रूप से भासती है, ज्ञप्ति जगत के रूप में भासती है, और वह यद्यपि अनेक अवयवों वाली नहीं है, परंतु जल उर्मियों के रूप से जैसे अनेक अवयव वाला भासता है, वैसे ही अनेक अवयवों वाली भासती है। हमारे जो दृष्टि वो ज्ञप्ति का विषय है, मतलब ज्ञान का विषय है। जो दिखता है वो दिखता तो है, अनेक रूप होने से वो बदलता हुआ दिखता है। जो दिखता है वो फिर नहीं भी दिखता है। इसीलिए अनेक रूप में, अनेक अवयव के रूप में, मतलब अनेक हिस्सा से दिखाई पड़ता है। जैसे जल को हम जब देखते हैं, जल को सीधा जल के रूप में नहीं देख करके तरंग अथवा उर्मियों के रूप में हम देखते हैं। यही हम देखते हैं जल को। इसका मतलब ये नहीं है कि जल अनेक है। जल को अनेक रूप में देखता हुआ भी जल को हम एक ही मानते हैं। ऐसे ही जो संसार को हम अनेक रूप में देखते हैं, वो हिस्सा में अनेक है, परंतु चीज तो एक ही है। Other example we take, just as we see the water, surface of the water. What do you see? Can you see the water absolutely in steadiness? There will be only wavery surface, some ripples, some waves, in many forms we see the water. That does not mean water is many. Water is only water. Water is one, but while seeing, it appears to be in many forms. Similarly, when we see our world outside, which is not one, it is in many. Whatever we see, it cannot be one only. It is seen by parts. So it is seen in numeral form. It is not single. So, just as the water is seen in different many forms, and yet it is one only, we know it. Similarly, whatever we see outside, though it appears to be many, yet it is only one truth. It cannot be many. Basically, it is one only. कोई भी एक, इसको हम बार बार देख रहे हैं, कोई भी एक को देखना चाहेंगे तो वो एक के रूप में नहीं दिखाई पड़ेगा, वो अनेक के रूप में दिखेगा। देखना जो है वो एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में हमेशा परिवर्तन दिखता है। जो प्रक्रिया नहीं है, जो परिवर्तनशील नहीं होगा, वो एक रूप में दिखेगा। उसको देखने का नाम हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए वो दिखेगा नहीं, वो अनुभव किया जा सकता है। और भी उदाहरण हम देते हैं, जैसे शहद का जो टेस्ट, उसका स्वाद जो है, उसका हम अनुभव तो करते हैं खाने के बाद, लेकिन उसको जब हम प्रकाश करते हैं दूसरों के सामने, वो किसी भी हालत में अनुभव को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जो हम बोलेंगे वो
थोड़ा बहुत उसके बराबर होगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। जो हम प्रकाश करते हैं अपने अनुभव को, वो एक प्रक्रिया होने से वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। उसमें बदलाव जरूर आएगा। अनेक रूप में हमको प्रकाश करना पड़ता है। देखना मतलब ऐसे ही अनेक रूप में हम देखेंगे, लेकिन अनुभव में एक आ सकता है। यही हम बार बार विचार करके देखे हैं। दुनिया में जो अनेकता दिखता है वो एक ही है, जिसको हम एक के रूप में नहीं देख सकते हैं। Whatever we see, it is, though in many forms, it is but one only. Just as we taste the honey, whatever we experience the taste, while expression, we express it something other than the experience. Because expression needs some language, it needs some support. So it becomes a process. Process means is a changing phenomena. That means changing actions. It has to change, go on changing. Our experience, honey, it is like something we have to say. Expression exactly cannot be expressed. So whatever is expressed, that means whatever is under the subject of our senses. When we express, we hear it or know it by some informations. Our expression, whatever we know by expression or by seeing by our senses, they are subject to change. It cannot be the truth. Experience cannot be expressed, but it can be expressed which will be somewhat equal to the experience. Somewhat, not 100%. It cannot be. So, on this basis, whatever we see by our senses or we know by our senses, knowledge which is informative, some information we get by our senses, that is not the truth. It is subject to change, so it appears or it is known as numeral forms. It cannot be one without a second. It is expression or it is perception, so it cannot be the real truth. It somewhat equal to the truth because it is expression of the truth. So we have to see it from different angles. As you see, you can take it. It is either 100% truth or it is somewhat truth. So truth cannot be avoided from it. Without the truth, there is no world. Without truth, there is no expression nor any information. So everything is based on the truth. So truth has to be accepted. It cannot be rejected. This is what we know from logic and from different angles of analytical study. अनेक रूप से होकर आया हुआ एक आत्मा ही दृष्टि के अज्ञान से
विवर्त रूप उदय है, यानी संसार है। यह संसार स्वयं अवस्तु रूप होने के कारण तत्व दृष्टि से भलीभांति देखा गया भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। He gives another logic. Say, I know what is the taste of honey. So whatever I expressed, the taste is like this. You have heard it, you know something. You have not tasted honey, but you know something about honey, what I told you. Okay? Can that information, what you got from me, can it be without my experience of the honey taste? Can it be there? Without tasting honey, without having experience of the taste of the honey, can I express anything which you know, which you get as some information from me? Can you? No, without honey, without the taste of honey, can the information stand by all alone without support? No. By no means. It has to be dependent on the experience. So whatever we perceive or whatever we see, they are not the reality. The experience is the reality, which stands always the same. It is not subject to change. But whatever we know about it, means perceive or see it or get some information about it, that will be subject to change. But that has to be supported by that. So the background cannot be denied, which is the absolute truth. ये हम जो अनेक रूप देख रहे हैं, सब नाम रूपों के रूप में हम जो दुनिया को देखते हैं वो अज्ञान ही है, क्योंकि हम इसको अनुभव नहीं कर रहे हैं, हम देख ही रहे हैं। और ये विवर्त रूप है, मतलब कुछ बदला हुआ, बदलापुर कहते हैं ना वो हमारे टीवी में, बदलापुर ये बदला हुआ है। वो सही जो चीज़ असलियत है वो नहीं है, वो कुछ बदला हुआ चीज़ देखते हैं हम। जैसे शहद का हम अनुभव का प्रकाश करते हैं, वैसे ही ये दुनिया सब कुछ बदला हुआ है, विवर्त, इसी को कहते हैं विवर्त। जैसे जल तरंग के रूप में बदला हुआ है, ऐसे ही ये संसार है। यह संसार स्वयं अवस्तु रूप होने के कारण तत्व दृष्टि से भलीभांति देखा गया भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम चाहे कितनी कोशिश कर लेंगे जानने के लिए, जानने के योग्य नहीं है। आत्मा जानने का योग्य नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे सब कुछ ज्ञप्ति का विषय है, अभी कहते हो ये जानने का योग्य नहीं है। कैसे, क्या भाई? अभी तो हम बोल रहे थे ना सब ज्ञप्ति का विषय है। जो चंद्रमा और पहाड़ के बीच में जो दूरी को हम जानते थे ना, तो जानकारी के अंदर सब कुछ आ जाता है। ज्ञान के अंदर ज्ञान का वस्तु, ज्ञान का विषय सब कुछ है। तो अभी तुम कैसे बोलोगे कि जो जाना जाता है वो सच नहीं है? वो ज्ञप्ति
और ये जानकारी जो ज्ञान है इसमें थोड़ा सा अंतर है। ज्ञप्ति जो परमात्मा का स्वरूप को ज्ञप्ति कहा गया, जो तैयार है प्रकाशित होने के लिए, प्रकाशित नहीं हुआ है। जल बिल्कुल जल है, लेकिन वो उर्मी अथवा तरंग के रूप में हम नहीं देख रहे हैं अभी उसको। अगर जल के रूप में देख रहे हैं, जो तरंग का रूप लेगा उस जल को हम कहते हैं ज्ञप्ति। जैसे ज्ञप्ति मतलब ज्ञान का विषय है, वो है, और जो बाद में बदलने के लिए तैयार है। जैसे मान लो बीज के अंदर जो भावी वृक्ष तैयार है उसको कहते हैं ज्ञप्ति। और जैसे शुरू हो गया अंकुर का उद्गम, तो उसको हम ज्ञान अथवा प्रकाश बोलेंगे। जो प्रकाश सही नहीं है, वो परिवर्तन का सहारा से वो प्रकाशित होगा। बिना परिवर्तन से वो प्रकाशित नहीं हो सकता है। परंतु वो जो स्थिति में प्रकाश होने का जो शक्ति को वो स्थिर रूप से रखा हुआ और अस्थिर होने वाला है, उसको हम बीज कहते हैं। वैसे ही परमात्मा जब अपने आप को देखने के लिए तैयार है परंतु देखा नहीं, एक को हम नहीं बोला, बहुश्यामन नहीं बोला, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति नहीं दिखाई दिया, उसके पहले जो है उसको ज्ञप्ति कहेंगे, तैयार है। मोमेंटम, नॉट इन एक्शन, उसको हम ज्ञप्ति कहेंगे। और ज्ञान जो है, जैसे साधारण हम ज्ञान जो व्यवहारिक ज्ञान हम कहते हैं, वो सूचनात्मक ज्ञान है, वो परिवर्तन का सहारा से ही प्रकाशित हो सकता है। तो इसी रूप से जो देखा नहीं गया और जो देखा गया, दोनों तो ज्ञप्ति का विषय है पर ज्ञान का विषय नहीं। जो देखा नहीं गया वो ज्ञान का विषय नहीं, ज्ञप्ति का विषय। ज्ञप्ति और ज्ञान में थोड़ा सा अंतर है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? If someone is ready to change, then you can make him to change. If he or she is not ready, then you cannot. We give the example of a momentum which is not in action. Say you are driving a car very fast. All of a sudden you put the brake. What happens to the car? It stops. But there is the momentum which is it is not seen, not been seen. The moment you lose the brake, it will move on. That momentum which is not in action, it is there. You cannot say no. That is called Gyamti. Gyamti means the transcendental knowledge. Potential energy and kinetic energy. Yes. That is ready to activate any moment, but it is not in action. So that is a little difference only. So whatever is not seen, that is subject to experiential knowledge, whereas whatever is seen, it is subject to informative knowledge, which is subject to change. It can be changed.
यही बात, थोड़ा सा अंतर है और ज़्यादा अंतर नहीं इसमें, परंतु जो देखा गया जो नहीं देखा गया सब वो सत्य का स्वरूप है, और जो दिखाई पड़ता है वो अनेक रूप में, वो संसार, उसको हम नहीं मान सकते हैं, उसी को हम संसार कहते हैं। वो सत्य का विवर्त है, वो बदलापुर है। यह संसार स्वयं अनु अवस्तु रूप होने के कारण तत्व दृष्टि से भली भांति देखा गया भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम संसार के ऊपर विचार करते हैं तो कुछ मिलता है विचार करने से, लेकिन सच्चाई में उसको हम कुछ कुछ वस्तु के रूप में नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे ही हम बोलेंगे ये ऐसा है, वो तो बदल चुका है, तो फिर कैसे बोला जाए। बदलाव का नाम प्रकाश करना, और जो सच्चाई है उसको हम प्रकाश नहीं कर सकते। प्रकाश जो किया गया वो सच नहीं है। इसी के ऊपर हम मानना पड़ेगा कि सत्य जो है वो संसार नहीं है, और संसार जो है वो सच नहीं हो सकता है। कितने भी विचार कर लो, लेकिन वो किसी रूप से पाया नहीं जाता है। जैसे यह जीव अवयव रहित होता हुआ भी हाथ पैर आदि अपने अवयवों की कल्पना कर स्वप्न मनोरथ आदि में अवयव वाला हो जाता है, वैसे ही सदा से अवयव शून्य स्वभावतः शांत यह ब्रह्म ही जगत रूप अवयव से अवयव वाला बन जाता है। तो हम संसार को परमात्मा का अंग मानेंगे। ये दूसरा उदाहरण साफ करने के लिए, सफाई देने के लिए बताया। जैसे मैं अगर मेरे को देखूं तो क्या देखूं? मैं मेरा अंग प्रत्यंगों को देख पाऊंगा, मैं मुझे नहीं देख पाऊंगा। मैं मुझे जानता हूँ, अनुभव करता हूँ मैं हूँ, लेकिन देखूंगा तो फिर हिस्सा से देखूंगा, एक हिस्सा से। उसको अवयव एक अंश बोलते हैं, अंश से देख सकते हैं, पूर्ण को नहीं देखा जाता है। वैसे ही स्वप्न का उदाहरण दे रहा है। वह स्वप्न में मन जो देखता है वो अपने आप जो सोचता है, अवयव वाला माने जो पहाड़ पर्वत पशु पक्षी आकाश नदी अथवा कोई जीव जंतुओं को देखता है स्वप्न के अंदर, वो स्वप्न में मन ही उसको बनाता है। जैसे सोचता है वैसे बन जाता है, जैसे सोचेगा ऐसे ही बनेगा। इसी के ऊपर हमारा तो कहावत है, जो जैसे सोचता है वो वैसा बनता है। आज यू थिंक सो यू बिकम, इसी के ऊपर तो है ही ये कहावत। तो जो हम सोचते हैं, और ऐसे ही स्वप्न में जैसे मन अनेक रूप को बना लेता है, अपने आप जैसे सोचेगा वैसा रूप को देखेगा वो। वैसे ही गीता का जो बताया गया, हम जो शरीर धारण करते हैं, जो जीव जिसका स्थूल शरीर नहीं है, वो कर्म का गति के अनुसार, कर्म का प्रेरणा के अनुसार वो एक स्थूल शरीर को धारण करके फिर वो अपना बचा हुआ कर्म का भोग करेगा। ये कर्म का नियम। तो वो जब सूक्ष्म शरीर को कर्म का भोग के लिए स्थूल शरीर में बदलना चाहता है, तो जैसे वो कर्म को भोग करेगा
उसके लिए एक स्थूल शरीर चाहिए। वो स्थूल शरीर को जैसे मन सोचता है वैसे ही बना लेता है। उसके लिए उदाहरण, जैसे माली को बगीचा बनाने के लिए जो औजार चाहिए, वो जैसे उसको ज़रूरत पड़ता है वैसे आकार वाला, व्यवहार में करने वाला, लेने वाला औजारों को लोहार के पास जा कर के बनवा लेता है। खोदने के लिए फावड़ा या गैंती अथवा जो साबल वगैरह, खुरपी वगैरह, ये सब जैसे उसको चाहिए वो बना लेता है। ऐसे ही मन भी स्थूल शरीर को एक व्यवहार के लिए यंत्र के रूप में बनाता है और उसके अंदर सूक्ष्म शरीर प्रवेश करके, जैसे गाड़ी के अंदर ड्राइवर प्रवेश करके गाड़ी को चलाता है, ऐसे ही सूक्ष्म जीव ये स्थूल शरीर को बना करके उसके अंदर बढ़ जाता है। तो ऐसे ही वो कह रहा है ये सारा संसार जो है ये अवयव वाला है। इसको परमात्मा का जो इच्छा शक्ति जैसे देखना चाहेगा वैसे ही बना लेता है। ये बनावटी है, बनावटी है। ये ब्रह्म जो है वो जगत रूप अवयवों को धारण कर लेता है, अंग प्रत्यंग को बना करके फिर अपने को देखता है। परमात्मा जैसे हम अपने शरीर को देखते हैं अनेक रूप में, हाथ कान आँख नाक के रूप में, वैसे ही परमात्मा अपने आप को संसार के रूप में देखता है। दूसरा भी उदाहरण, जैसे हम अपना छवि को दर्पण में प्रतिबिंब के रूप में देख करके सोचते हैं ये मैं हूँ, ऐसे ही परमात्मा अपने अंदर अपना रूप को देखता हुआ संसार के रूप में मानता है मैं ऐसे ही हूँ। उसी का नाम वेद में कहा गया एको हम बहुश्याम। मैं देखना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ अनेक, मुझे मैं देखना चाहता हूँ। और संसार के रूप में वो अपना परछाया को देखता है। और भी उदाहरण है, जैसे बच्चे अपने छाया को पकड़ने के लिए भागते हैं, छाया के साथ खेलते हैं, वैसे ही परमात्मा अपने छाया को देखते हुए इसी में आनंद लेता है। Just as the dreamer creates the beings, whatever he sees in the dream, the mind sees the dream and he makes all the, it becomes all the beings, whatever is seen in the dream, whatever objects is seen in the dream, it is mind which makes and it becomes all those in many forms it becomes and it sees itself as the dream. There is no other being in the dream. Why? Because that is not seen by other. What you dream, that is not seen by the other person near you. So it is your dream. So you made it. So you means your mind has made it. So mind becomes all those names and forms in the dream. It creates all these. It becomes all these. Similarly, if you want to see yourself, say, I am the body. Generally, everybody knows I am the body. So if I want to see my body, I cannot see the whole body. I have to see
the body part by part. Hands, legs, or the parts of the body can be seen. The whole body cannot be seen. Can you see? I am seeing you whole body. No? One thing at a time. Everything cannot be seen. Cannot be. Because our vision is limited. It cannot see whole thing at a time. Of course, the whole body is being seen, but one after the another, one after the other. So at a time we cannot see the whole body. The whole totality is never seen. The one is never seen. The parts of the one is visible. So that one has become many. One is seen as many, that means one has become many. So it is said, when the subtle body wants to enjoy its rest of the fate, whatever he has done in the previous births, he has to enjoy all the good and bad results of the actions. So for enjoying all those, it needs a gross body. So the subtle body makes the gross body as it requires, just as the gardener makes its instruments as per the need by the help of the blacksmith. He goes to the blacksmith and asks him to make the instruments whatever he needs. Similarly, the individual subtle being, he makes the body to enjoy the karmas, actions, whatever he has done in the previous births. It has to be enjoyed. And other example, say you want some vehicle to use. So what you do? As per your choice, you get the vehicle. Say a cycle, or a motorcycle, or a car, or simple, little small car, or very advanced car, or a car which can fly and can swim in the water and can run in the ground. Such a car you need. So you have to order for it and get it as you like. And then you become the driver of the car. Then only you enjoy it. So to enjoy according to your need, you get the vehicle. Or instruments also. When you need something, according to your need, your supply will be there. So as you think, as you need, so you get. On this basis it is said, as you think, so you become. So you become. You thought of becoming an engineer, so then only you struggled for it and became an engineer. You thought for becoming a doctor, then only you become a doctor. So as you think, so you become. Similarly, the being, as it needs or it thinks, so it gets a body. And body is its own made. And if you want to see your body, either you can see by your eyes or your senses physically, or if you want to see yourself, what do? You see
yourself in the mirror. The reflection you see, which is your reflection, and you think it is myself, I am. And you do everything. You behave with the reflection. You have your relationship with the reflection. And if you have to comb your hair or put some chandan or something, or you want to make up your hair or dress yourself, so you see the reflection and do accordingly, isn't it? You enjoy the reflection. So we can say, this world is nothing but the reflection of, or the shadow of the Absolute, and the Absolute truth enjoys by seeing all these names and forms, whatever is seen. Just as we enjoy our reflection, so the cosmic being enjoys all these reflections, which is named as the world. And this also can be said to be a dream, just as you enjoy your dream according to your mental state. So also, as you think, so you see the dream, you become everything in the dream, means your mind. So the cosmic mind also dreams, and its dream is this world. As it goes on thinking, so it sees all these names and forms in its dream. Because it is cosmic being, so the visibility is known as the cosmic world. And as long as he will be dreaming, so long this dreaming world will exist. And when he gets up from the dream, the world will cease to exist. That is we call dissolution. Just as you get up and your dream vanishes, where does it go? Nobody knows. Similarly, all these worlds, whatever is dreamt by the cosmic being, it vanishes when he withdraws its dream. In this way, we know something about this visible world. जैसे यह जीव अवयव रहित होता वह भी हाथ और पैर आदि अपने अवयवों की कल्पना कर स्वप्न मनोरथ आदि में स्वभावतः आदि में अवयव वाला हो जाता है, वैसे ही सदा से अवयव शून्य स्वभावतः शांत यह ब्रह्म ही जगत रूप अवयव से अवयव वाला बन जाता है। यह चित्ती रूपी कुलाली जब स्मरण करती है तभी जगत को देखने लगती है और अपने भीतर लाखों की संख्या में बड़े बड़े बर्तन धारण करने लग जाती है। कुलाली मतलब कुलाल होता है, कुम्हार का चक्र को कुलाल कहते हैं, जो घुमाता है। और कुलाली वो कुम्हार की घरवाली को कुलाली कहते हैं। वो जैसे जैसे सोचती है वो ऐसे ऐसे बर्तन बना देती है
Other example he gives, just as a pot maker, the earthen pot maker, he has a wheel. On the wheel, center of the wheel, it keeps some clay, and as it thinks, it goes on rotating the wheel, and slowly it makes the pots. Whatever he wants, size, shape, he makes. And then many pots together, when it is dried up, then it makes it perfect by burning in the totally some क्या कहते हैं, भट्टी को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? हैं? Furnace, yes, in the furnace. So all the pots are open, and it becomes the pots. So as he thinks, so he makes the pots. According to its thoughts, the pots have size and shape and everything. So this nature is taken as the sea pot maker. And whatever she wants to make the names and forms, the shapes and sizes of the objects, it goes on making all these. Just as the pot maker makes the pots, so the cosmic being also creates all these names and forms. Finding the best clay for that is difficult nowadays. Huh? Finding the best clay for that is a difficult task for us. Or now. Best clay? Because No, it is. if we get the best clay, then we can make as per our. Here we give the example. Example is always taken one-sided. Example is not taken as full simile, partial simile. The face looks like moon, beautiful like moon. That doesn't mean it is moon. It looks beautiful as moon or soothing like moon. So one part of the simile is taken. So here, pot maker makes the pots as per its thoughts. That is only taken. It is the ingredient clay is not taken here. So, if you ask where from the creator collects all these ingredients, so it is said he collects all these ingredients by his mind, because all these are thoughts only. Thoughts have taken a shape. So by thoughts, he thought of the 5 elements, 5 gross basic elements, the sky and the air, fire, water and earth. All these are its clay, the material cause. Out of all these, he thought all these and he saw all these, and out of all these, he went on making different pots. पंचीकरण करके तभी तो ये सारा नाम रूपों को बनाया. तो वो जैसे ये सारा मानसिक है, वो भी जो वस्तु से जिसको बनाया वो भी मानसिक है. पंच तत्व जो है वो भी जैसे सोचा, वही तो सृष्टि क्रम हमको बताया गया. परमात्मा जब सोचा मुझे देखूं, मैं अनेक रूप में अपने को देखूं, तब क्या हुआ, वो पहला
एक अहंकार पैदा हुआ। उसी को हम जो कहते हैं हिरण्यगर्भ अथवा विराट अथवा तेजस, अलग अलग नाम से हम बोलते हैं। तो वो विराट जो है वो अपने को एक तेज पुंज के रूप में देखा। तेजस मतलब देखने का जो सहायक है, आलोक, जो स्वयं तेजस जो है, अपने आप को एक तेजस के रूप में देखा। तो उसी का हम हिरण्यगर्भ कहते हैं, या सुबह क्या क्या सुवर्णमय यम पुरुष, क्या आता है एक, तो उसी को हम स्वयंभू स्वयं तेजस इस रूप में हम नामकरण करते हैं। और उसके बाद फिर ही वो अंग प्रत्यंग को देखना शुरू करता है। जब तब पंचभूत पहले आकाश के रूप में अपने को देखता है, और फिर अपने आकाश के अंदर जब अपने अवयवों को देखना शुरू करेगा, तब फिर वही खुद जब देखा आकाश के अंदर, मैं आकाश हूँ, मेरे अंदर वायु, मैं अपने को स्पर्श करना चाहूँगा, तब फिर वायु रूप में अपने आप को देखता है। ये खाली एक कल्पना मात्र है। ऐसा अकल्पयन करके बार बार आता है ना हमारा जो उपनिषदों में, कर्म कांड में, ऐसा कल्पना किया, जैसे कल्पना किया ऐसे ही देखा। और जो कल्पना किया उसको कहते हैं सत्य संकल्प। जैसे कल्पना करता है उसका एक नाम रूप के अंदर उसको वो देखना लग जाता है, उसका एक रूप को बना देता है। और उसको हम दूसरे ढंग से कहते हैं, वो जो 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 अनंत है उसमें एक रूप को वो कल्पना करता है, जो अनलिमिटेड है, जो अव्यय है, उसके अंदर एक रूप को कल्पना करता है, उसी को आकाश मान लो। और उसके अंदर फिर और दूसरे को कल्पना करता तो उसको वायु मान लो। और वो गतिशील मैं अपने को स्पर्श करूं तो वायु रूप बन जाता है। और वो अनंत नहीं बन करके शांत हो जाता है, मतलब उसका सीमांकन कर देता है। उतने ही जितना सोचेगा उतने ही देखेगा उसको। जैसे मैं हाथ को देखूंगा, हाथ को सोचता हूँ तो हाथ को देखता हूँ तो पैर को अनदेखा कर लेता हूँ। तो ऐसे ही तो सब कुछ एक के बाद दूसरे को देखने लग गया, अपने आप को ये देख रहा है। और अपने आप को बना दिया भी, मान लो जैसे कल्पना करके ये कुम्हार अपने बर्तनों को बना लेता है, ऐसे ही ये अपने रूपों को बना लिया है। उदाहरण तो ऐसा एक देशीय होता है, आधा ये एक उदाहरण का एक चीज को लेकर के तुलना किया जाता है। कुम्हार बर्तनों को बनाता है, परमात्मा अथवा सृष्टिकर्ता ये नाम रूपों को बनाया है। इतने ही तो, जैसे सोचा, जैसे जरूरत है, जिसके साथ खेलेंगे। जैसे बच्चे को खेलने के लिए क्या चाहिए, तो वैसे ही खिलौना तो खरीदेगा, या नहीं तो बना लेगा। बच्चे वो खरीदना, कोई खिलौना खरीदने का जरूरत नहीं, उसको किसी चीज़ में भी वो खेल लेंगे। मैं एक बार देखा, कुछ गुजरात से कुछ लोग आए थे, वो कैंप में, हमारा आई कैंप हो रहा था, उसमें सब लगे हुए हैं सब। और उनके साथ जो बच्चे आए थे, उनको आई कैंप में क्या, हॉस्पिटल से क्या लेना था, ये इधर लाने में बैठ गए क्या आपस में खेलना शुरू कर दिए। उनके पास कुछ नहीं है, परंतु वो खेलना शुरू कर दिए। वो गारे निकाल दिए, उसमें करना शुरू कर दिए। नहीं तो हाथ लगाएंगे ऐसा, फिर कुछ बोल करके फिर
कैसे भी अपने आप में खेलना शुरू कर देता है। कुछ नहीं हुआ तो ऐसा कर लो एक दूसरे को पकड़ेगा बिच्छू। तो उनको कोई वस्तु की जरूरत ही नहीं खेलने के लिए, अपने आप में सब कुछ बना लेते हैं। द चिल्ड्रन डोंट नीड ऑलवेज सम अदर idols to play. They can make anything to play. Anything they can make. Simply sitting, they will take out some pebbles and then go on playing. Or if nothing is available, in their body also they go on playing, making something. And then some rope करते हैं ना सब कुछ को कुछ बना लेंगे. Anything they can make. They have that creative mind. Children can do anything. And they will go to the sandy beach and they will go on making so many things, which has got no importance. But as long as they are playing, it is everything for them. So seriously they do everything. So similarly, the Creator goes on playing. Whatever it needs, it creates by itself. It doesn't have and it doesn't need anything from outside. It makes everything out of himself. Just as the children need not go to the bazaar to purchase some idols. They can make anything out of anything. So this is how we see the world. यह चित्ती रूपी कुलाली जब स्मरण करती है तभी जगत को देखने लगती है और अपने भीतर लाखों की संख्या में बड़े बड़े बर्तन धारण करने लग जाती। अपने अंदर कुमार जब सोचता है बर्तनों को बनाने के लिए, अपने अंदर पहले देख लेता है, तभी वो रूप देता है बाहर। ऐसे ही चित्ती मतलब प्रकृति भद्र चित्ती रूप होने के कारण यह ब्रह्म ही अपनी सत्ता से सुंदर जगत के रूप में ऐसे भासता है जैसे द्रव रूप होने के कारण सागर तरंगों के रूप में भासता है. He gives the other example, just as the ocean appears to itself in the form of waves or whirlpools or bubbles, not as the water, though it is water only, but it sees itself, the ocean sees itself in the form of waves or tides, tsunami, or bubbles, or whirlpools, or current, so many things. It sees all these within itself, not outside of it. Similarly, this nature, the creative power, or the creator, we can say, creator sees itself, its own body in these forms, names as the world. It is his body, just as waves are nothing but the body of the ocean. Similarly, this world
our visible world and ourselves also, whatever we are, not only ourselves, all the names and forms of the beings, including human beings or animals or birds or all these mountains, rivers and the forest or the air or fire, whatever we see, everything is the body of the Creator. He sees all these in this way. Just as we see ourselves, see how many hairs and uh, holes and colors and nerves, so many differences in our body. Just as we see our body, so he sees his body. His body is the world, so-called our visible world. जिसका अपने अंदर अध्यास से आकाश करता है, प्रकाश करता है, उसको ब्रह्म मानो देखता है। यद्यपि ब्रह्म अरूप है, तथापि उसे अपना रूप मान बैठता है और उसे अपने अंदर जिसका अध्यास नहीं करता उसे नहीं देखता। समझ में आ गया? जैसे वो सोचता है अपने को वैसे ही देखता है, मतलब जैसे देखता है अपने को वैसे ही वो सोचता है, दोनों वाइस वर्सा। मैं अगर मेरे को खुजली हुआ कहीं तो मैं किसको देखूंगा? जहाँ खुजली हो रहा है। अच्छा, जब मैं इसको खुजली कर रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ, तो पैर को देखता हूँ क्या? पैर को भूल चुका हूँ। ऐसे ही तो परमात्मा जैसे जैसे अपने को सोचता है वो ऐसे ही देखता है और अपने शरीर को अनेक रूप में देखता है। Just as we see our body in different many forms, sometimes finger, sometimes when scratching is there, oh, it is some swelling, oh, here is a nerve, no, this is my nail, oh, it is some lines. Whatever I see, I forget other parts, one thing at a time. And that all these what I see, it is within myself and it is my body only. Even the hair tops, yes, it is I. Similarly, the Creator sees all these in his own body as his body. ब्रह्म में चेतनता और चेतनता को लेकर जो कुछ वचन प्रयोग किया जाता है वह तो माया सबल होने से सर्वशक्ति संपन्न होने के कारण ब्रह्म के विषय में नहीं है, किंतु स्वदेहभूत माया के ही विषय में है। यानी चेतनत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व माया गति ही है। यह वचन केवल उपदेश देने के लिए ही कहा जाता है, वह वस्तुतः परमार्थ विषय का नहीं है, ब्रह्म का कुछ भी स्पर्श नहीं करता। तो ये इसको बोलने का मतलब, हम जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ समझते हैं गुरुमुख से या बड़े अनुभवी पुरुषों के मुख से, हम जो संत महात्माओं से, मुनि ऋषियों से जो हम सुनते हैं और जो समझते हैं, जो देखते हैं, ये सब सिर्फ
एक भाषा के अंतर्गत कहा जाता है। ये सिर्फ एक दूसरे का व्यवहार के लिए, भाव का आदान प्रदान करने के लिए ये भाषा का व्यवहार करते हैं। ये सचमुच सच जो सत्य है उसके बारे में नहीं। ये तो व्यवहारिक लेन देन, जैसे हाँ किसी के साथ कोई संबंध जोड़ना तोड़ना, इसके लिए ये सब भाषा का प्रयोग होता है। ये भाषा का अर्थ परमात्मा नहीं है, ये व्यवहार के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। He says whatever we use as the medium of our language, whatever language we use for our transactions, to express our thoughts, ourselves, our feelings, or to get others' feelings, the medium is language, whether it is audible language or body language or some medium that is called language, expression. All these language are used only for relative transactions. All these language is not the language of the truth. It cannot express the truth. All the language is faulty, informative, and it is relative, comparative. It cannot express the truth. It doesn't have any relation with the truth. Whatever language we use, it is only relative. It has got nothing to do with the absolute truth. लोगों को इन विषयों के लिए आग्रह ही क्या नहीं, ये क्या करा है। भद्र जगत न सत है और न असत है, केवल चित्ती शक्ति में बहिर्मुख वृत्ति के कारण भासता है। यदि बहिर्मुख वृत्ति का त्याग हो जाए तो वह भासता ही नहीं। इसलिए हम लोगों को इन विषयों के लिए आग्रह ही क्या। अच्छा, अभी हम पहले जो अध्याय में 33वां अध्याय में जो हम विचार कर रहे थे, हमारा बहिर्मुखता और अंतर्मुखता, बहिर्मुखता से दुनिया, अंतर्मुखता से परमात्मा। अंतर्मुखता का स्थिति को हम मुक्ति कहते हैं और बहिर्मुखता को बंधन कहते हैं। दृश्य जगत जो नाम रूप वाला अथवा कार्य क्रिया और कर्ता के रूप में हम देखते हैं, अथवा कर्ता क्रिया के रूप में देखते हैं, अथवा नाम रूपों के रूप में, अथवा जैसे कार्य कारण के रूप में देखते हैं दुनिया को। ये सब जितना ये जो कुछ है ये सब बहिर्मुखता का नाम है। अंतर्मुखता में ये सब नहीं रहेगा। एक केंद्रीभूत, एक स्थिरता में सब समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अंतर्मुखता होने से आराम मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, और बहिर्मुखता से दौड़ भाग, मतलब जो मन का अस्थिरता, ये बहिर्मुखता के कारण होता है और इसी को कहते हैं दुनिया। ये हम पहले विचार किए थे। अभी यहाँ आकर के इतना विचार करने के बाद ये बोल रहे हैं कि ये जो चित्ती मतलब प्रकृति, जो माया जिसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं, अथवा प्रकृति स्वभाव बोलते हैं, तो ये एक शक्ति है। ये शक्ति जब
अंतर्मुखी स्थिर हो जाता है तो दुनिया नहीं है, और बहिर्मुखी हो करके अनेकता को देखने के लिए शुरू करती है, तो ऐसे ही ये सब दुनिया दिखता है। चित्ती का मतलब पराशक्ति का, ये बहिर्मुखता का नाम ये दुनिया है, नाम रूपधारी, और अंतर्मुखता वो स्थिरता का नाम है। हम चींटी को क्या कहें, अपने को हम देख सकते हैं। जब हम अपने को नहीं देखना चाहते हैं तो हमारे शरीर का कोई भान नहीं होता है। मैं हूँ वो तो अनुभव होगा, लेकिन किस रूप से मैं नहीं देखता हूँ अपने को। और जब देखना चाहूँगा तो अनेक रूप में देख लेता हूँ शरीर को। नहीं देखना चाहूँगा, जैसे सुषुप्ति में मन बुद्धि इत्यादि आराम करते हैं, देखना काम छोड़ दिए, तो वो शरीर को अनेकता को नहीं देखते हैं। ऐसे ही वो परमात्मा का जो इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, वो शक्ति जो है पराशक्ति है, वो जब अपने आप को देखना चाहती है तो दुनिया में अनेकता को देखती है, और उसको बहिर्मुखता वृत्ति कहते हैं। और जब देखना छोड़ देती है तो ये संसार नहीं दिखता है, और वह परमात्मा में स्थिर रूप से अवस्थान करती है। उसको व्यक्त और अव्यक्त के रूप में हम नामकरण किए हैं। अव्यक्त शक्ति और व्यक्त शक्ति। व्यक्त ही संसार है, अव्यक्त जो है परमात्मा है और शक्ति, और उसी को अंतर्मुखता अव्यक्त और बहिर्मुखता व्यक्त दुनिया मानते हैं। मतलब शब्दों का खाली जाल है। इसको इस रूप से आखिर हम गया जो अध्याय हम विचार किए थे उसके साथ ही इसको दिखा रहा है कि ये बहिर्मुखता का नाम दुनिया और अंतर्मुखता का नाम परमात्मा। He says introvertness, when you don't want to see, you keep quiet. That is, you don't see your body as many names and forms. You see nothing, but you are there. So also, when the universal power, which is the cause for all these extrovert world, when it keeps quiet, becomes introvert, then there is no world, no visible names and forms, no visible world. When it becomes introvert, no world, it becomes one with identical with the absolute truth. And when it becomes extrovert, then all these projection or magnification, multiplication, names and forms, and movement, action and reaction, all these are seen as the world. This is called extrovertness of the nature or the supreme power, and introvertness is no world. It is absolute steadiness. ऐसा भले ही हो, इससे हुआ क्या, हमको क्या मिला? ठीक है, दुनिया रहे ना रहे, हमारा क्या है? तो बोलते हैं आत्मा का चैतन्यत्व और अचेतनत्व स्वाधीन है। इसमें किसी यत्न की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपने स्वरूप में स्थित स्फटिक पत्थर के सैकड़ों बिंब प्रतिबिंब रूप स्पंदन और स्पंदन स्वाधीन है,
इनमें किसी दूसरे प्रयत्न का या श्रम का आवश्यकता नहीं रहती है। वैसे ही आत्मा के चेतन अचेतन के विषय में भी जानना चाहिए। ये अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, इसको जो हम विचार करते हैं, इससे हमको ये निष्कर्ष निकलता है कि ये जो बहिर्मुखता और अंतर्मुखता, ये भी प्रकृति का अथवा परमात्मा का शक्ति का ये स्वतंत्रता है। इसमें कोई परतंत्रता, किसी के ऊपर सहारा नहीं ले सकती, ये स्वतंत्र है। जब चाहिए तब बहिर्मुख, जब चाहिए अंतर्मुख। जैसे जब मैं चाहता हूँ मैं आंख बंद करके चुप बैठ जाता हूँ, जब चाहता हूँ उठ करके घूमता फिरता हूँ। तो इसके लिए मैं किसका परमिशन लेना पड़ता है या मेरे किसके ऊपर आश्रय लेना पड़ता है क्या? हाँ हाँ, आप बोलेंगे हाँ जरूर, किसका? डॉक्टर का कहना सुनना पड़ता है। अरे वो तो रोगियों के लिए। हाँ, लेकिन निरोग कोई व्यक्ति किसी का सहारा नहीं लेता है। जब चाहिए तब आंख खोलो, जब चाहिए तब आंख बंद करो। वो तुम्हारे स्वतंत्रता के अधीन है, परतंत्र नहीं कोई। तो ऐसे ही ये चीती महारानी जो आदि शक्ति अथवा प्रकृति करके हम मानते हैं जिसको, वो ये इसका बहिर्मुखता जिसको हम संसार करके बोले, उसमें उसके लिए परतंत्रता नहीं है, वो स्वतंत्र है। और अंतर्मुख जो है संसार का खत्मा, तो वो भी स्वतंत्र है। वो जब चाहिए तब, उसमें परमात्मा की जो इच्छा शक्ति वो परतंत्र नहीं, स्वतंत्र है। हम उसके ऊपर हम सवाल नहीं कर सकते हैं ऐसा क्यों और कब, क्यों नहीं, कैसे नहीं, ये सब हम सवाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र है। मेरी मर्जी, मैं अपने मकान में 10 मंजिला मकान में पेट्रोल डाल के आग लगाऊंगा और उसमें जल करके आधा जला हुआ कूद जाऊंगा और पैर हाथ तोड़ूंगा और जा कर के थाना में अपने नाम पर FRI भरूंगा। तुम कुछ नहीं बोल सकते। मेरी मर्जी, मैं जो करूं जो सोचूं मेरी मर्जी। तुम नहीं बोलना, तुम नहीं देखना, तुम नहीं बोलना, कुछ नहीं कहना, मेरी मर्जी है कि नहीं? तो ऐसे ही परमात्मा की मर्जी, the absolute power, the supreme power or the power holder, the supreme, is supremely independent. He is not dependent on anything because he is absolutely one. He cannot be dependent. And independent on what? On its will. As he wants, so he sees or thinks or do whatever he does. He is independent. Why? Because just as you are independent to see yourself or not, to be extrovert or to be introvert, you are independent. Your will is independent. So also the cosmic will is independent. Nobody can question. Unconditional, independent. So everybody is independent of his own will. As you think, nobody can command on anybody. That is called human right.
But when you have the right, others have also the same right. That doesn't mean you have to interfere, you have got right to interfere in others' affairs. No. Everybody is independent. So total being also is independent. Because he is one, so he is absolutely independent. Because we are many, so we are relatively independent. Our right is relative right. We are not absolutely independent. So this is what he says in the end. This extrovertness or the creation by the Supreme Power or the Supreme Being, or the introvertness means no creation, means withdrawal of extrovertness. Introvertness is not dependent on anything, it is independent of itself. So you cannot say how long this world, visible world will exist, and how, after how many years there will be dissolution. There is no timing, there is nothing. But yet we calculate the ages, eras, and the creation, how long it will be, after how long it will dissolve. All these we calculate astrologically. Is it right or wrong? Relatively right. Relatively right. You see, when some company makes a car, he gives its time, how long it will work, say 20 years or 30 years. After that, all the parts will not be able to work. You have to throw it out. Similarly, this creation also. When once you have thought, how long you can think it? In this way, relatively we may calculate, but absolutely he is independent. No condition, no calculations. The time, space and conditions cannot reach in the absolute. It is unconditional. So tomorrow we shall see further introvertness, extrovertness, creation and dissolution, and visibility and non-visibility. All these points we go on discussing simultaneously. Hari Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasisate. Om Santi Santi Santi. Sadguru Bhagavan ki jai, Sachidananda Bhagavan ki jai, Sabda Brahma ki jai, Saraswati Maharani ki jai, Jo Vasirji Bhagavan ki jai. Hari Om.